Hello, Assalamu alaikum and welcome to Just Law on IQRA TV. I'm your host Ilyas Bulbulia and I'll be with you for the next hour. On Just Law, we normally do two things. First of all, we normally discuss an area of law which is of interest to our viewers relating to English law. And secondly, more importantly, Just Law is a live show. So whatever questions you have on any aspect of English law, please do pick up the phone, give us a ring, and hopefully we should be able to provide you with some guidance in relation to any queries that you have. On this show, we should be able to cover a number of different areas of English law, from immigration matters, family law matters, personal injury matters, etc. So whatever your question relates to, as long as it's relating to an aspect of English law, hopefully on this show we should be able to provide you some guidance in relation to that. We get a lot of questions relating to immigration matters, which is fantastic. And that's one of the reasons that the topic that we normally choose to discuss with our viewers relates to immigration matters. And likewise, today's topic also relates to immigration matters. And in particular, it relates to the issues surrounding United Kingdom leaving the European Union in the next few months. So that's the topic we'll be looking at today. So although today we're looking at European matters, nonetheless, hopefully whatever your questions are, we should be able to deal with those as well. Just a couple of points before we get going. Obviously it's a live show, so we're not able to look at documents before we advise you. If it transpires that I need to look at your documents before I can give you firm advice, then I will ask you to contact me off air and then we can arrange for you to send your documents to me. Secondly, just a final point before we get going. Obviously it's a live show, so we're only able to provide you with general advice. If you're still not sure as to your position, you should seek independent legal advice, or alternatively, if you leave your number with the control room, I can have a more detailed discussion with you off air. Okay, that deals with the preliminaries. And as I said at the outset, today what we want to look at is immigration matters, but in particular issues relating to or issues which will no doubt arise relating to the United Kingdom leaving the European Union in the coming months. As no doubt anybody who follows the news will know, that the sort of cut-off date, the date when the United Kingdom leaves the European Union, is the end of March 2019. So we're literally 4 months away from leaving the European Union. So a lot of questions arise as to what the position will be once we leave in March 2019. What's going to happen with the European Unions who are already in the United Kingdom? What's going to happen with people who might be coming to the United Kingdom in the months which follow the exit date, which is the end of March 2019? So what I want to do today is look at some of those issues. No doubt there are a lot of European nationals in the United Kingdom at the moment, and no doubt there are family members of European nationals who are living in the United Kingdom who are unsure as to what's going to happen in the coming months and coming years. To some extent, the reason we've got because the reason why there's uncertainty surrounding this issue is because there's no firm deal at the moment that the UK has agreed upon with the European Union. As anybody who follows the news will know, Theresa May has come back with proposals that is going to be put to the Cabinet and the country to see what will happen with that. We'll look at that in greater detail after we've taken our call. Hello, Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम इलियास भाई। जी वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। मेरा ये सवाल है कि मेरा बेटे की वाइफ इधर आई है, उसको 2.5 साल का वीजा मिला है जी, 2.5 ईयर का। जी ओके। तो वो उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड है, टैक्सी ड्राइवर है, तो उसका वीजा जो है उसकी वाइफ का एक्सटेंड होना है 2020 में, जो है ना एक्सटेंड होना मई में। जी ओके, मई में जी। तो पूछना मैं ये चाहता था कि उसकी इनकम लेवल जो है वो पूरा नहीं है अभी तक, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर पूरा नहीं कर रहा था थ्रेशोल्ड। तो मैंने पूछना ये था कि वो कोई बेनिफिट अगर ले, हाउसिंग बेनिफिट या वर्किंग टैक्स क्रेडिट, तो उसका कोई असर तो नहीं होगा? या उसकी बीवी अगर आखिरी 6 माह में उसके साथ काम कर ले, कोई
तो क्योंकि अभी उनका बेबी है छोटा, तो अभी तो वो काम नहीं कर सकते। जी, तो इसमें ये है ना कि अभी वो अगर कोई बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करे, आपका बेटा जो यूके नेशनल है, अगर वो कोई बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा इसमें। वर्किंग टैक्स क्रेडिट, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, हाउसिंग बेनिफिट, जो भी वो अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। अगर उसका इनकम पे उसको ये बेनिफिट्स मिल सकती है तो इट डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में इसमें इश्यू ये है कि अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है आपका बेटा और एक्सटेंशन मई 2020 में करना है, तो उसके लिए उसकी इनकम जो वो बताएगा, नॉर्मल अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसकी इनकम वो देखेंगे अप्रैल 2019 से लेकर अप्रैल 2020 तक, वो टाइम में वो इनकम देखेंगे। वो लास्ट 6 मंथ्स को तो ऑब्वियसली नहीं देखेंगे, लास्ट 12 मंथ्स भी वो नहीं देखते। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए वो अप्रैल टू अप्रैल देखते हैं। सो उसके लिए द लास्ट फाइनेंशियल ईयर विल बी अप्रैल 2019 टू अप्रैल 2020। फिर में अगर वो मई में अप्लाई करे तो वो साल पे वो रिलाई कर सकता है। सो अभी तो टाइम है उसके पास, अगर वो इनकम अगर उसकी ठीक हो जाए तो वो ठीक है। आपने ये बताया ना कि वाइफ का कोई वो इनकम बता सकता है या नहीं, बता सकता है वाइफ की इनकम, मगर वाइफ की जो इनकम है ना वो भी वो साल में होनी चाहिए, अप्रैल 2019 से लेकर अप्रैल 2020, वो साल में जो उसकी इनकम होगी वो काउंट करेंगे। सो वो लास्ट 6 मंथ्स वाला रूल है ना, वो इसमें अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, उसकी वाइफ को भी पूरे साल की इनकम शो जी, वो पूरे साल की देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल अप्रैल 2019 से अप्रैल 2020 तक पूरे साल में अगर वाइफ की इनकम है लेट्स से 6,000 पाउंड्स, सो 500 पाउंड्स अ मंथ मिलता है, पूरे साल का उसका 6,000 पाउंड्स वाइफ की इनकम होगी। अप्रैल 19 से अप्रैल 20 6,000 पाउंड्स होगी। तो फिर आपका जो सन है तो उसकी इनकम बतानी होगी 12,600, सो दोनों मिलाकर 18,600 हो जाएगा। जो बेटे की जो इनकम बताएंगे 12,600 ये एग्जाम्पल में, तो वो इनकम होनी चाहिए अप्रैल 19 से लेकर अप्रैल 20 तक। तो ये दोनों मिला सकेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम और वाइफ की एम्प्लॉयमेंट इनकम, वो दोनों मिला सकेंगे अप्रैल 19 टू अप्रैल 20 तक। तो ये उसका सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम है टू नॉर्मल। इसमें एक और पॉइंट है कि अगर इनकम ठीक नहीं है तो उसके वाइफ को तो वीज़ा तो वो दे देंगे, क्योंकि आपने जो बताया ना कि चाइल्ड भी है ना, अगर चाइल्ड है तो उसको वीज़ा तो दे देंगे वाइफ को, मगर जो उसको वीज़ा देंगे वो ऐसे देंगे कि 10 साल के बाद उसका इंडेफिनिट होगा, मगर वीज़ा तो वो दे देंगे उसको मई 2020। नहीं तो वो अगर वो आखिरी 3 साल बाद या 4 साल बाद अगर वो पूरे थ्रेशोल्ड कर लेते हैं तो फिर भी वो 10 साल के रूट में चलेंगे या? हाँ, असल में प्रॉब्लम क्या है कि जब वो 10 इयर्स रूट में डाल देते हैं ना जी, तो फिर इसमें 10 इयर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। अगर किसी की इनकम ठीक हो जाए तो फिर वो 5 ईयर वाला रूट में अप्लाई कर सकता है, मगर 5 इयर्स वाला रूट में उसको दोबारा ज़ीरो से वो शुरू करेंगे। अच्छा, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता ना फिर। अच्छा, तो वो दूसरा थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन आ रही है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल से अप्रैल तक होता है, तो मई में अगर उसका वीज़ा सपोज ख़त्म हो रहा है तो वो 28 दिन पहले वो सेम डे पे भी अप्लाई करता है, तो फिर वो शायद वो मिस हो जाए, फिर पिछले ईयर का इस साल का भी शायद पूरा देना पड़े, या कोई ये तो नहीं मसला होगा? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो असल में ये है ना कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मई में, आपको पता है कि मई में कब वीज़ा ख़त्म होगी, आपको पता है? मई में, हाँ, मिड में मई में। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल 15 मई को वीज़ा फिनिश होगी, तो अर्लीस्ट एप्लीकेशन जो वो कर सकेगी वो अप्रैल 17, अप्रैल 18 को वो अर्लीस्ट वो एप्लीकेशन डाल सकती है, अप्रैल 17, 2020 में। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसका रूल्स में ये है ना कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स चाहिए, तो अप्रैल 17, 18 में अगर कोई अप्लाई करता है तो उसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर तो वो होगा ना 5 अप्रैल 2019 से लेकर 5 अप्रैल 2020। दिस इज़ द प्रॉब्लम है, वो फाइनेंशियल ईयर है। और अभी एक न्यू सिस्टम है कि सब ये ऑनलाइन हो गया है अभी फ्रॉम दिस मंथ। तो इससे क्या होगा कि जब वो फॉर एग्जांपल मिडल ऑफ अप्रैल, एंड ऑफ अप्रैल, बिगिनिंग ऑफ मई जब वो अप्लाई करेंगे तो वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अभी वो ऑनलाइन अप्लाई करना, जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे कि जिस डेट पे वो पेमेंट कर देंगे
तो वो डेट पे उसका एप्लीकेशन हो गया, फिर उसको 15 वर्किंग डेज और मिलते हैं डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए। सो उसको थोड़ा सा टाइम तो मिल जाता है डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए। आपके लिए अपन मेन इश्यू क्या है आपके लिए, और अभी भी टाइम है आपके पास, कि उसके जो अप्रैल 19 से लेकर अप्रैल 20 जो इनकम है उसको ठीक कर लो, वो इनकम को, तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। जी थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह, आपने कॉल किया, थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. जी, थैंक यू। I have a question regarding the spouse sponsorship form. Okay. Specifically the financial requirement form. Okay. So I'm self-employed and for the director as I run a limited company. When it comes to filling the form, do I need to fill in the self-employed section or the salaried employee section, or do I fill in both sections? It's a bit unusual. That form is not very good. Okay. The form is not very good. The reality is, it's, just before you get to that section, there will be, one of the questions is the requirements you need to meet. Is applying without a child, 18,600. You tick that box, yeah? Then you go down further, and then it asks you which category you're applying under. Yeah. Category A, category B, C, D, E, self-employment. It's important, really, you tick the right box there. Okay. So it's one of the lower boxes. I can't tell. What I will do is, when we go for the break, I'll work out which box you tick, and I will tell you on air which box you tick. Then, when you go on to deal with how you meet the requirements, actually, it should be done as self-employed, not the salaried section. As an employee. Not as an employee. It should be done as self-employed. The key thing is, it's not so much which section you fill in. You tick the right box, and it's the evidence that you provide which is important. Right. If you're a director of a company, and I'm assuming you're a shareholder of the company. Yeah. You have to provide all the documents. So you know that you'll need to provide accounts, company tax return, all of that, company's house report, business bank statements, same as the financial year, personal bank statements, same as the financial year, wage slips, bank statements, P60, dividend vouchers, money from your business account to your personal account. You just need to make sure you provide the right documents. But what I'll do is I'll just check whilst we go for our break, and after we come back from our break, I'll tell you which one it is that you need to take. And then if you've got any questions, if you call us back after our break. Okay, that's fine. Okay, then. All right, thank you. Okay, thank you very much indeed. And so it's a slightly complicated query which relates to spouse applications, and both those queries that we've had today relate to spouse applications. Normally with spouse applications, it's 6 months wage slip, 6 months bank statements, but these situations do ask for different documents, and I'll deal with that in detail after we've come back from our short break.